वेलकम टू इनोवेटिव कोड्स। मेरा नाम इमरान इकबाल है और ये Adobe Photoshop का 1 मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक मोबाइल फ़ोन से ली हुई फ़ोटो के ऊपर बुके, ब्लर या पोर्ट्रेट इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस काम के लिए हम Adobe Photoshop को ओपन कर लेते हैं। Adobe Photoshop ओपन करने के बाद सिंपल आपने Ctrl+O को प्रेस करना है। अपनी डिज़ायर्ड इमेज को इसमें इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आपने सिंपल इसके जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें फॉलो करना है। आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच मुझे लगती है मैं आपको वो बताता हूँ। सिंपल आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। Ctrl+J की को आपने प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि लेयर 1 के नाम से यहाँ पर एक डुप्लीकेट लेयर बन चुकी है। इसके बाद आप फिल्टर सेक्शन में आइए, यहाँ पर ब्लर के ऑप्शन में आइए और यहाँ पर जितने भी ब्लर कैटेगरीज हैं आप उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन हमें फ़िलहाल इस पर्पज़ के लिए गॉसियन ब्लर को अवेल करना है। यहाँ पर इसकी जो रेशो है उसे डिफ़ाइन कीजिए। ये इमेज के रेजोल्यूशन के हिसाब से जो भी सूटेबल आपको लगे आप उसे सिलेक्ट कीजिए एंड हिट द ओके बटन। सिंपल। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty.